This video is for informational purposes only, based on personal research, and should not be considered as financial advice. It does not constitute any recommendation to buy, sell or hold any securities. Viewers are advised to conduct their own research. हेलो नमस्कार फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं एंड यू आर डूइंग वेल इन द मार्केट. एंड इफ वी आर focused in no matter what kind of market condition, risk can be taken, and as we take risk, we as speculator get rewarded. तो ये जो करंट सिचुएशन है मार्केट का, ये दोस्तों बहुत ही रेंजिश मार्केट है. And in this rangish market, कौन सा strategies best होगा is of course the range neutral strategies, especially आप अगर derivative section में play कर रहे हैं. And since market is broadly in a range, majority of the breakouts are not going to work. But saying that, the strong stocks will continue to do well in this kind of market. तो एक बार डायरेक्टली चार्ट के साथ चलिए दोस्तों, समझते हैं कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन निफ्टी. बहुत ही मिक्स मार्केट सिचुएशन. प्राइस एक्शन इज फेवरिंग, बुल्स को फेवर कर रहा है, वेरएज बाकी कोई बुल के सपोर्ट में नहीं है, ना तो मेजर मोमेंटम ना ट्रेंड बेस्ड ऑन द डेली चार्ट. ये रहा. तो अब आप देख पा रहे हैं क्लियरली. So we are in a range currently. Buyers, sellers, probability sellers के तरफ है in favor, but I'll say momentum out of my 8 factor momentum में 6 factor bull के साथ है. So bullish एक vibe तो clearly आ रहा है, which will be visible in the more 2 hourly chart, but still I'll say a strong bull bear fight is going on. एंड बियर्स, आई थिंक उनका जो पकड़ है या अटेम्प्ट टू ब्रेक डाउन लोअर, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया. एंड ये रिस्क एक डिसाइसिव मोमेंट पे है निफ्टी. एंड करंटली ये जो मंथ है, आई थिंक ये रेंज में बिता सकता है. मोर मार्च ऑनवर्ड्स, एज फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है, काफी क्लैरिटी मिलने वाला है. सो इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, फोकसिंग ऑन द स्ट्रेंथ एरियाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सेक्टर्स को देखेंगे, एंड विल ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड कलर फ्लैग करेंगे सेक्टर्स को डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रेंथ. सो वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट का इस्तेमाल करेंगे टू डू दिस. पहले थोड़ा वीकली चार्ट में देखेंगे सिचुएशन क्या है. लाइक दिस इज ऑटो सेक्टर. ऑटो सेक्टर चार्ट को थोड़ा एडजस्ट कर ले. एक बुलिश वाइब तो ब्रॉडली वीकली में है 71%, बट नथिंग, जो लॉट ऑफ वार्निंग भी है. ये जब व्हाइट क्रॉस आउटसाइड रहता है, इट्स यूजुअली सर्व कि मेरे लिए एक वार्निंग है कि इट उतना भी समथिंग अंडरलाइन गोइंग ऑन, मे बी स्ट्रगल, बुल बियर फाइट. सो ओवरऑल एक बुलिश वाइब है डेफिनेटली वीकली चार्ट में. सो फर्दर बुलिशनेस तो आ सकता है इन द ऑटो सेगमेंट, बट इमीडिएटली मोर क्लैरिटी हमें मिलेगा लुकिंग एट द डेली. एज आई सेड, क्लियरली पता चलेगा कि कहीं पे फाइट चल रहा है, over control. But I still see not significant downside immediately for the auto segment. So of course, bulls need to succeed the breakout very soon. 29,000 का जो लेवल है, around 28,900. सो लेवल के ऊपर जब सस्टेन करने लगेगा एज अ सेक्टर, तो स्टॉक्स में क्या होगा, फिर फर्दर मोमेंटम आ सकता है. सो ऑटो सेक्टर इज डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग. तो वीकली चार्ट में समवॉट नोटेबल, तो इसको मार्क कर देंगे, येलो में मार्क कर रहे हैं, या लेट्स डू पर्पल. सो अब जो देख रहे हैं दोस्तों, कॉमोडिटीज ओवरऑल सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग बुलिश वाइब, 86% विन प्रोबेबिलिटी एज अ सेक्टर, विच इज वीकली चार्ट वेरी नोटेबल. डेली चार्ट में समवॉट फाइट गोइंग ऑन, बट वाइब्स है मेजोरिटी बुलिश के तरफ. तो इमीडिएटली सेक्टर, ये जो सेक्टर है, वीकनेस अभी तक उतना तगड़ा नहीं आया, बट बुल्स आर फेसिंग टुमुल्टस टाइम, क्योंकि आसान है कि ब्रॉड मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी है, बाइंग भी. सो सम स्ट्रगल जो चल रहा है, दैट इज वेरी वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस मार्केट का. तो कमोडिटी में भी देखने लायक नोटिसेबल बुलिश है वीकली में, तो इसको भी मार्क कर देते हैं पर्पल में. सो लेट्स टेक अ लुक एट कंजम्पशन.
This is not a strong chart. It is undergoing bearish consolidation. सुपर बियरिश नहीं है, बट बियरिश कंसोलिडेशन फेज में है. एंड आई थिंक ऐसा ही फेज में, एक रेंज बाउंड फेज में ये बिताने वाला है. इफ वी लुक एट द डेली चार्ट, सिमिलर टू ब्रॉड मार्केट, सम फाइट, बट इट इज क्लियर कि बियर्स फेवर में है. सो कंजम्पशन सेक्टर को उतना नोट नहीं करेंगे. अनदर सेक्टर विच आई हैव बीन बिट ऑफ वोकल अबाउट, थोड़ा ज्यादा मे बी रेफर, हाँ चलो रेफर किया हूं, बट मेरा फोकस है, नॉट अबाउट रेफरेंस, कहाँ पे मेरा फोकस है, डेफिनेटली ऑन द एनर्जी सेगमेंट. ये मैं दिसंबर से अपने मार्केट टॉक में हाईलाइट कर चुका हूं कि एनर्जी दिस ईयर इज ओवरऑल इन द कमोडिटी ग्रुप इन माय फोकस, along with of course some of the stock and sectors. So daily chart we see bullish. Let's look at the weekly chart. So weekly chart is also notably bullish, but there are resistances to take note of. सो एक बुलिश हम चल रहा है, एक वाइब्स आ रहा है बुलिश का. ऑफ कोर्स एक रेजिस्टेंस है सेक्टर वाइज, सो बहुत सारे स्टॉक्स को आपको रेजिस्टेंस से मिलेगा, लिटिल बिट ऑफ केयरफुलनेस, बट एक बुलिश वाइब्स है ओवरऑल सेगमेंट में. सो देयर कुड बी अपॉर्चुनिटीज कि अगर करेक्शन भी आए आफ्टर कंसोलिडेशन, सम स्टॉक्स विल गो डाउन, एंड कुछ होगा कि कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट. तो आई यूज माय रेनबो सेटअप टू लुक एट. सो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज बुलिश डेफिनेटली. इसको मैं, बट दिस टाइम आई मार्क इट रेड. बोथ द डेली एंड द वीकली इज नोटेबली बुलिश. फाइनेंस सेक्टर्स को देखते हैं. फाइनेंस इज significantly bullish, probability is very strong. Some warnings are there, so bull bear fight दिख सकता है. This is the weekly chart. White cross is एकदम marginal border पे, so we can see some bull bear fight in the daily chart. हाँ, कैंडल छोटा हो गया है, सो नो सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है. कंट्रोल उतना प्राइस एक्शन के ऊपर स्ट्रेंथ है नहीं ओवरऑल फाइनेंस सेक्टर्स का. तो प्राइस एक्शन देख के जो लोग ट्रेड करेंगे, बहुत जिगजैग मिलने वाला है इन द शॉर्ट टर्म. लुकिंग एट द सेक्टोरल चार्ट, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, जस्ट लुकिंग एट द चार्ट वी कैन अंडरस्टैंड दिस. बट ओवरऑल एक जो हम है, वाइब्स है, वो है बुलिश की तरफ स्टिल. सो आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा. आप विद इन दिस, इसमें क्या है कि फाइनेंस में अगर ओवरऑल एक बुलिश हम है, तो वी हैव टू लुक फॉर मोर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन देम. सो फाइनेंस को स्टिल मार्क कर देंगे इन द रेड. नन ऑफ द बोथ द कैंडल्स वेर बुलिश. Weekly maybe. FMCG is not a sector I'm happy about. It's correcting, so we can look for some early opportunities who are bouncing back and who is creating some good rectangular position or good base. But overall sector wise, it's recent comeback, और we ऐसा comeback बहुत natural होता है जब broad market एक सेलिंग प्रेशर के अंडर रहता है. तो ओवरऑल क्या होता है, देन FMCG स्टॉक को एक स्टेबल नेम माना जाता है. सो ओवरऑल एक रेजिस्टेंस के पास है, सो वंस अगेन सेल ऑफ रिज्यूम हो सकता है इसमें एफएमसीजी सेगमेंट में. सो बिकॉज वन कुड बी, वन ऑफ द रीजन कुड बी इजीली वैल्यूएशन. काफी जगह वैल्यूएशन इज स्टिल ऑन द हायर साइड, एंड कंजम्पशन में अगर स्लो डाउन हुआ, हाउ विल दे परफॉर्म इकोनॉमी वाइज, दैट डेफिनेटली एक कंसर्न रहा है ओवरऑल. So FMCG segment, it is coming back, no doubt, came back rather, coming back now, came back. And I think it has a quite a high risk of another round of turn lower. So FMCG is a segment I'll be careful about, not immediately be very aggressive to the segment. This is the infra chart, very small candles. So once again, price action control पे फाइट चल रहा है पूरा. प्राइस एक्शन फ्रंट पे, इसमें बिगर चार्ट में भी अगर देखो तो प्राइस एक्शन फ्रंट पे बहुत सारा जिगजैग. इसका मतलब है लॉट ऑफ छोटा मोटा फ्लक्चुएशन के अंदर स्टॉक्स को मूव करते हुए हम देख सकते हैं इन द इंफ्रा सेगमेंट. सो नॉट सुपर बुलिश, बुलिश वाइब्स, एटलीस्ट बियरिश नहीं है, इतना बोल सकते हैं, उतना स्ट्रांगली बियरिश नहीं है. एक फाइट चल रहा है फॉर कंट्रोल. ओवरऑल एक बेस है, सो दैट इज पॉजिटिव फॉर द बुल्स, बट बेस होते हुए भी ये रेंज हो सकता है अगर सेल ना हुआ तो. सो बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्रा नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली नॉट अ बियरिश येट सेगमेंट. जो बियरिश है उसका नाम है, आप जानते हैं, आईटी. आईटी है बहुत ही बियरिश. एंड
AI के जमाने पे finally the question has come up towards the model the Indian IT companies generally operate, service oriented rather than product oriented. So that can be one challenge. ओवरऑल सेगमेंट एकदम बियरिश मोड में है. सो ऐसे जंप करना मेरा पॉलिसी नहीं है. जहां पे वीकनेस है आई प्रेफर नॉट टू गो इन. सो आईटी सेगमेंट कहीं ना कहीं पे ऑफ कोर्स देयर विल बी अ स्टॉप ओवर, but stocks needs to get ready. This kind of bearish segment is significantly bearish. So IT is definitely something to extremely careful of. I don't think the sell off is over. बट बहुत शार्प हुआ है तो मोर ग्रेजुअल सेल ऑफ हो सकता है लाइकली. मीडिया क्लियर है, ये जो कमबैक है ये फेल हो रहा है. मीडिया इज जो सेगमेंट है उतना स्ट्रॉन्ग कमबैक नहीं है. एंड लुक्स लाइक द कमबैक इन द डेली चार्ट इज फेलिंग ऑल्सो, फेल हो रहा है डेली. सो मीडिया इज डेफिनेटली नॉट अ सेगमेंट जहां पे इंटरेस्ट है. रैदर मेटल लास्ट ईयर से बहुत अच्छा किया है. वन ऑफ द रीजन की कमोडिटीज डन वेल. तो उनमें डेली चार्ट में अब जो दिख रहा है दैट इज मोर फाइटिंग चल रहा है फॉर कंट्रोल. सो ये फाइटिंग में विच स्टॉक्स इज गेटिंग वीकर इन द सेगमेंट, डेफिनेटली यू हैव टू बी केयरफुल. बट ओवरऑल अभी भी स्ट्रेंथ मेंटेन कर रहा है. मतलब अमॉन्ग मेनी सेक्टर्स दिस सेक्टर इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. एंड चार्ट देख के लग रहा है फर्दर स्ट्रेंथ रिमेन्स वेरी मच पॉसिबल. सो मतलब निफ्टी का जो नॉन परफॉर्मेंस, उसके अंदर सेगमेंट परफॉर्मेंस जो चल रहा है काफी अच्छा है, कॉन्सिडरेबल जो इस टाइप ऑफ रेंजिश मार्केट रहा. सो सेक्टोरल फोकस कि कौन सा सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग, एमएनसी हैज बीन स्ट्रॉन्ग, ये हम बार बार देख रहे थे. वीकली चार्ट इज स्ट्रॉन्ग. So metal will mark it with purple. One definitely one chart has been strong. And here also the chart strong. Definitely I'll not mark it weak, but again price action front पे काफी fight देखने को मिलेगा. So MNC I'll mark it strong as well. Pharma, let's look at pharma segment because इसमें थोड़ा comeback नजर आ रहा है. From the base again bulls have come back. तो फार्मा सेगमेंट में देखना चाहिए कि विच स्टॉक्स आर जिन किनको ये ऊपर का थर्स्ट मिल रहा है. एंड सिग्निफिकेंट डेली चार्ट में एक इंपॉर्टेंट लेवल रीच हुआ है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हुआ इन द फार्मा सेगमेंट. सो फार्मा इज डेफिनेटली ए कमबैक सेगमेंट के हिसाब से. इसके ऊपर नजर रखना चाहिए एटलीस्ट वन लेवल तक. I'll not mark it two, बेस्ट है तो then I'll mark it red, but definitely something to take note of. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सेगमेंट भी काफी स्ट्रांग रहा. अगेन इसमें व्हाइट क्रॉस थोड़ा वार्निंग दे रहा है कि प्राइस एक्शन फ्रंट में फाइटिंग विद सम ब्रेकआउट्स भी नजर आएंगे. एंड इन द वीकली चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट. सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैज बीन वेरी नोटेबली स्ट्रांग. अनदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेगमेंट रहा सेक्टर्स का, वो आप लोग को मालूम है कि इट्स अ बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली पीएसयू बैंक. पीएसयू बैंक हैज बीन एक्सट्रीमली स्ट्रांग. एंड अगर इसमें अब एंट्री मिलना कि ब्यूटीफुल वीकली वाइज एंट्री मिलना लिटिल टफ हो सकता है. बट बोथ चार्ट्स आर वेरी स्ट्रांग. आई मार्क पीएसयू बैंक्स वेरी वेरी स्ट्रांग सो फार. एंड इन्वेस्टमेंट उसी पे बहुत अच्छा जा रहा है. एंड वन शुड नॉट, जो आप लोग अगर इन्वेस्टेड हैं तो इमीडिएटली एग्जिट का बारे में मत सोचिए. इट्स अ वेरी स्ट्रांग सेगमेंट गोइंग वेल. आपको वीकनेस दिखा देन यू कंसिडर कि कहां पे वीकनेस दिख रहा है. छोटा मोटा प्राइस एक्शन से वी शुड नॉट बी, आई नॉट बी वेरी वरीड अबाउट. रियल्टी सेगमेंट जहां पे वीकनेस है आई प्रेफर टू अवॉइड. एंड विथ माय रेनबो सेटअप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू मी. आप भी क्लियर होकर इन्वेस्ट कीजिए. देखिए सेगमेंट वाइज सर्विस सेगमेंट जो आईटी के साथ क्लोजली, काफी सारे आईटी कंपनीज इन द सर्विस सेगमेंट. सो नॉट रियली ग्रेट सेगमेंट राइट नाउ कि उसमें ज्यादा फोकस करके बॉटम हंट के लिए डेफिनेटली सम पीपल कैन ट्राई आउट. बट स्टिल सम एक पॉज सेलिंग में होना बेटर होगा. सो सर्विस सेगमेंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग. प्राइवेट बैंक कंपेयर टू, मैं तो बोलूंगा पब्लिक सेक्टर नॉट डन वेल. एंड वन ऑफ द रीजन इज एचडीएफसी बैंक, वो उसको ज्यादा वेटेज मिलता है इन द पब्लिक सेक्टर. बट जनरली स्पीकिंग बैंक्स हैव बीन डूइंग बेटर, जो चार्ट से आप देख सकते हैं क्लियरली.
ऐसे सेक्टर तो कुछ नेम्स में इन्वेस्टेड रह सकते हम लोग, बट डेफिनेटली वो दैट काइंड ऑफ बुलिशनेस वो है नहीं इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक सेगमेंट. Nifty consumer durables, not a great segment, looks like it's in a struggle period. More range bound यहाँ पे मिलेगा with bullish thirst, but nothing to be excited about in the consumer durable, and as well not much to be excited about core housing. सो ये जो आईटी का वीकनेस, इसमें देखना होगा कि स्पिल ओवर हो रहा है इनटू इनटू द कोर हाउसिंग का जो सेगमेंट है. Not a great phase, great time also economically, fundamentally, for the housing where material price is gone up. If you put further inflated price, and then the demand can significantly get hurt. So not a great fundamental wise segment, I'll say, or definitely not a great um, chart wise also. So ये जो core housing है, I'll not prefer to be remaining there. The segment that is everybody could be find interesting is the EV. Largely, many of the car manufacturers are there. Some strength come back in the daily chart. Very important time pe hai ye segment. But this is a good one for future opportunity. So definitely, isme I'll prefer a buy signal in the Nifty EV segment. But currently, I'll be more interested to dive deeper into the EV to see which are the sectors performing, trying to make, which are the stocks trying to make a comeback. इसको देखते हैं चलिए. दिस इज फाइनेंशियल सर्विस एक्सक्लूडिंग बैंक ना. मिक्स फाइटिंग चल रहा है बेसिकली ओवर कंट्रोल. लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट. Very small candle, so we can't say anything about price action much. So बहुत ही mixed market मिलेगा in the financial services. Largely it's clear PSU banks are very strong. Healthcare is one segment which moves along with pharma, so comeback हो रहा है healthcare में. Some of the stocks आप देखना चाहेंगे who is making comeback. Daily chart में it has been strong, just similar to pharma. So this is a definitely noteworthy segment. हाउसिंग सेगमेंट डेली चार्ट बुलिश वाइब है. दिस इज कोर हाउसिंग से हाउसिंग. सो कोर हाउसिंग इज मोर वीकर देन द हाउसिंग सेगमेंट. सो हाउसिंग सेगमेंट का स्टॉक अब देख, वी कैन डाइव डीपर एंड हैव अ लुक कि चलो विच आर द स्ट्रॉन्ग वंस. ये एक सेगमेंट है जो सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग. शॉर्ट टर्म में यू मे सी सम फ्लक्चुएशन, बट ये सेगमेंट काफी स्ट्रॉन्ग रहा है. जो जो ऐसा मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म में हम लोगों को प्राइस एक्शन में स्ट्रॉन्ग फाइट दिखेगा, विच इज प्राइस एक्शन न्यूट्रल इन माय सेटअप. सो ओवरऑल इस मेजोरिटी काफी सारे जो मेन सेगमेंट हम लोग देखे. लेट्स लुक एट डिफेंस, फ्यू अदर सेगमेंट्स. से लेट्स लुक एट डिफेंस में क्या है. एक बुलिश कंसोलिडेशन, एक रेंज है, अपर एक रेजिस्टेंस, लोअर एक सपोर्ट. सो मोर रेंज बाउंड. तो रेंज बाउंड एक अच्छा फेज होता है जहां पे हम लोग डाइव डीप करके इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. एंड दिस इज निफ्टी इंडिया डिफेंस इन मोर इन द वीकली चार्ट. सो एक बेस मेकिंग प्रोसेस में है. सो सम स्टॉक्स मे बी गिविंग द बुलिश हार्म विद इन द सेगमेंट. सो डाइव डीपर इज डेफिनेटली नेसेसरी टू लुक एट. तो ऐसे ऐसे सेगमेंट मार्क करते रहेंगे. एक बार टूरिज्म देखते हैं. Not a great sign. Tourism is in a bad phase. Bearish in weekly, bearish pressure के अंदर in the daily. So not a great segment right now. Let's look at oil and gas, which will be similar to energy, slight different. Strong bull bear fight is on in the daily chart. Weekly chart has been somewhat bullish. And last one, let me take rural. Let's look at the rural segment.
These are Nifty index which is available in the NSE. Somewhat bullish, price action में confusion है, there is white cross outside, and in the short term chart candle too small, so confusion चल रहा है. ये जो breakout area के पास ऐसे confusion natural, अब कोई control ले. So definitely we are interested to dive deeper into the segment to see कि कौन सा strong है. अब जब हम लोग एक सेक्टर्स को आप नजर कर लिए, सेक्टर वाइज चार्ट को, नाउ वी कैन डाइव डीपर कि अच्छा पीएसयू सेगमेंट जो हम लोग, या पीएसयू बैंक सेगमेंट, या मेटल, हु आर द स्ट्रॉन्ग स्टॉक, अगर उसमें कहीं पे अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंट्री आ रहा है कि नहीं. अगर एंट्री नहीं है देन देर इज, उसको छोड़ना पड़ेगा. बट किसी में हो सकता है दोस्तों कि एंट्री भी मिले, देन एक कंसिडरेशन आता है कि चलो कितना रिस्क हम लोग लेंगे फॉर द रिटर्न अपॉर्चुनिटी. एंड ऐसे तरह स्टेप बाय स्टेप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप आ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ थोड़ा सेक्टर्स देख लिए. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर पसंद आया डोंट फॉरगेट टू पुट अ थम्स अप. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग.